उनकी जो एक beauty थी उससे इंस्पायर्ड है and it's a really beautiful collection. It's targeted, I think, for the modern Indian woman, where I'm wearing like a combination of something that's very traditional and then the blouse is nice and modern and it's something with a twist. कैसा एक्सपीरियंस था इस स्टेज का एंड वॉक का जिसके बारे में थोड़ा बताइए। ये एक्चुअली वेन्यू बहुत इंटरेस्टिंग रहा. ये पहली बार ऐसा वेन्यू रहा, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वॉक एट द लैक्मे फैशन वीक. बहुत अच्छा लगा. मेरा एसोसिएशन पारस और सोनम के साथ पहली बार है with their brand Swa. So it's been a really great collaboration. I've really had a great time. तो मैं आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा कलेक्शन के बारे में बताइए, किस तरह के कलेक्शन है थोड़ा। सो our collection एकदम ट्रेडिशनल है with touches of modernity in it. So निम्रत ने जो लहंगा पहना है उसमें It's called the collection name. It's the Noor Lehenga, and it's inspired from the Nautch girls of the British era. And we have used intricate motifs from the architectural of the Mughal era, and we have incorporated them into embroideries, and that's what you can see what Nimrat is wearing right now. The embroideries on the lehenga and very modern take on the blouse. That's what we have done. तो आपसे जानना चाहेंगे कितना कंफर्टेबल है इसके बारे में थोड़ा बताइए, कितना जी कंफर्टेबल कितना, ये तो अगर आप पहनेंगे आपको पता चलेगा. पर बट ये खूबसूरत बहुत है. और हाँ, मतलब इट्स वेरी कंफर्टेबल, ऐसा कुछ नहीं है. बट इट्स जस्ट दैट ट्रेडिशनल आउटफिट्स टेंड टू बी लिटिल बिट heavy, so it's not something obviously to be worn every day. It's a very very beautifully adorned outfit, so it's for a very special occasion. So special occasions के लिए कुछ भी everything we're willing to. What's your style statement? Sorry, what's my style statement? I think I like to be the best of myself. I don't like to be something that I am not or something that's on trend. I look for inspiration more from within rather than from the outside and elements of fashion and trend. Are there any trends that you're trying to follow for 2017 Uh, that you want to add to your wardrobe? Which ones would that be? I think exercising is a trend that I'm following quite heavily this year. I've started on a very fun note with a lot of exercise heavy days. So I have a lot of very exciting sportswear in my wardrobe right now. So but on a serious note, like really I actually don't pay that much attention to fashion trends and what's out there for 2017. I think my lists are a little bit different in that sense, but I'd like to experiment with stuff I've not worn before, or just kind of break the molds that you create for yourself, that okay, I will not wear this or I won't wear that. So I'll try to experiment a little bit more this year. Nimrat, you've worked internationally, you've done Homeland and then Wayward Files, but after Trump's, he's into presidentship now, he's the president of US. Do you think it's a matter of worry for Indian actors there now? I don't know if the been an new Obama American supporter. president. Sorry? You've been an Obama supporter. I think we all have been. Yes. President Obama was really something else. But I think President Trump has nothing to do with, actors getting employed here and there. I don't think that's a concern. I think there are bigger issues that, one needs to worry about with his presidency right now. So, yeah. Nimrat, give us a peekaboo into your 2017 wardrobe, in terms of traditional wear. Traditional wear, I love to go back into my mother's trunks, to see what she's got and if I can destroy something and make something out of it for myself. I love their collection. I love Swa. I love what they've got together. So I'd love to pick up a couple of pieces from them as and when, I need to. So I think I like to also, say that in different cities, in on different occasions, your idea of tradition and what you like to wear as traditional Indian outfits changes. So you don't want to wear the same kind of stuff in everything. Sometimes you like to pair up a long jacket with, straight pants or something like that, and that can also be in a traditional space. So yeah, I think it just depends on the occasion. Any particular color that you love? I mean, what would be your favorite? For which season? For summer resorts. For the summer resort season, I think coral. I love coral. Even pastels, any pastel, like a pastel green or just a lemon yellow. I love these shades. Nimrat, you're entering into the web series space, and have you started shooting for? No, I'm prepping for that. We haven't started filming yet, but soon enough. Quite excited about that. And what else is happening? You think web
web space is a really interesting thing. Yeah, I think that's a space that is the way forward, and it's something that just came my way at a time that I could pick it up. So it's an interesting platform to dabble with. So I'm quite interested in seeing how that pans out, and it reaches out to an audience that one hasn't explored before or one hasn't perhaps interacted with before. So and of course, content-wise, we can really push our boundaries and not be worried about so many of the factors that one needs to be concerned about in the movies. So that's very exciting. Nimrat, Valentine's Day is just round the corner. So what are your plans for Valentine's Day? Oh God, that's a very depressing question, yeah. Because I have no plans for Valentine's Day, so now I'll just make sure that at least I have some friends that I love, to hang out with. We'll probably go out for a meal or just something nice, and maybe a movie or Can something. you just say Happy Valentine's Day to the viewers? सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस था वॉक करने का एंड उसके बारे में थोड़ा बताइए। वेल मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने इस बार फैशन वीक के लिए मोनिका जी और करिश्मा जी के लाइन जेड के लिए वॉक किया एज अ शो स्टॉपर। इनके कलेक्शन का नाम अमात है। बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन जो एक आज़ादी की स्पिरिट, एक जो बंजारों की जो स्पिरिट होती है उसे कैप्चर करता है। एंड देव डन अ रियली लवली जॉब। They have managed to get all kinds of interesting essence of travel, of freedom, of femininity in their collection. तो मे भी वो आपको थोड़ा और बताएंगे अपने कलेक्शन के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? कलेक्शन का नाम अमात है। संस्कृत में उसे बाउंडलेस मीनिंग है। सो अमात में वी हैव ट्राइड टू टेक एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर एट द सेम टाइम एम्ब्रॉयडरी इंडियन यूज़ किए हैं, कलर्स एंड फैब्रिक्स वी यूज़ विच आर गुड फॉर समर। सो वी यूज़ ऑर्गेनिक फैब्रिक्स, कॉटन्स, मल्स एंड प्योर सिल्क्स। सर आपसे जानना चाहेंगे कितना मुश्किल था वॉक करना और कितना इजी था, कितना आसान था, कितना नर्वस थे आप? मैं एक एक्टर हूँ, मॉडल नहीं, तो ऑब्वियसली रैम्प मुझे बहुत डर आता है। और जब इतनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ आपके आसपास होती हैं जो इतने कॉन्फिडेंटली वॉक कर रही होती हैं, इतनी अमेजिंग लग रही होती हैं, तो ऑब्वियसली आपकी नर्वसनेस और डर थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन चूँकि मैं एक्टर हूँ और मुझे एक्टिंग करनी आती है, तो मेरी एक्टिंग काम आ जाती है रैम्प पे। बट नो, ऑनेस्टली आई मीन देव बीन वेरी सपोर्टिव एंड it was fine, it was great fun, and I think that it's a lovely collection, it's a very wearable collection. तो as an actor and as someone who जो उनके कपड़े अक्सर पहनता है, मुझे बहुत मज़ा आया। ओके, अगर स्टाइल की अगर बात करिए तो स्वरा का स्टाइल क्या है, क्या स्टाइल स्टेटमेंट है, उसके बारे में बताओ। आई थिंक कि मेरा किसी का भी स्टाइल उनकी अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो आई एम श्योर मेरा स्टाइल भी मेरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कभी कभी जब मैं बहुत ही आलसी फील कर रही होती हूँ तो वो बहुत ही झल्ला सा स्टाइल होता है। कभी कभी जब मुझे मन करता है थोड़ा ड्रेसअप करने का, तो हाँ वो थोड़ा एक ड्रेसी सा स्टाइल होता है। बट अल्टीमेटली अगर मेरा पर्सनल स्टाइल है तो इट इज़ थोड़ा सा बोहेमियन, थोड़ा सा रिलैक्स्ड। एंड एज आई सेड, आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं हैं आपने जिस चीज़ जो पहना है उसमें, तब आप अच्छे नहीं लग सकते। जैसे कि सर अनारकली के पोस्टर्स आ गए हैं, पिक्चर्स आ गए हैं जी, तो उसके बारे में बताइए किस तरह की। अनारकली मेरी आने वाली फिल्म अनारकली ऑफ आरा 24 मार्च को रिलीज़ हो रही है। एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी सिंगर की कहानी है। आरा जैसे आप जानते होंगे बिहार का एक शहर है, तो बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, बहुत अच्छा रोल है और उसमें एक देसी फैशन का सैम्पल मिलेगा आपको। यू गाइस हैव टू वॉच इट। हाँ, मे बी आपको कोई देसी झमका हुआ इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू।